Uh, good morning, dear students and my dear aspirants. So, guys, we are back with another session for UPSC Prelims 2021, and we are going to discuss something very, very important today. So, guys, I welcome all of you to this session of Civil Staff. And, guys, we always strive to provide you the best available. And as somebody asked me yesterday, sir, please try to cover assumption, inference, and conclusion and the meaning of and the difference in meaning behind these topics in one session. So that's what we are going to take up today. So, guys, am I visible? Am I audible to everyone? Good morning, Chandan. How are you, guys? I hope you've started preparing, and I think it is high time you did your best. Good morning, solar eclipse. Good morning, Shakib. Afternoon, good morning. It's one and the same thing. Hello, Ankit. How are you? Hello, Dhiru. Soumya, welcome to the session. Good afternoon, Niranjan. So, guys, please like the session. Please share it with anyone whom you know is preparing for this particular paper. So that may prove to be beneficial for someone. Good afternoon. Good morning, Anishka. Good morning, Niranjan. So, guys, so are we ready? Shall we begin? So, guys, today we are going to discuss, there are basically three types of questions that are usually thrown at you in the exam. The most common ones are inference-based questions. Second are assumption-based questions. And the third are conclusion-based questions. And many students do face this dilemma that, sir, we really actually cannot, differentiate between the three. What is the difference between an inference, an assumption, and a conclusion, right? So we are going to take that up today, and it's going to be really, really critical to understand. So please pay 100% attention, guys. So before we begin, guys, the topic, the session, first of all, I would like to give you an example to understand the difference between an inference, assumption, and conclusion, right? So, guys, basically, inference is some logical fact or data or information that is given in the passage that we have understood. So inference is basically it's a piece of information that is given in the passage. So something that has been mentioned in the passage, that is called the inference. So whenever you're looking at inference based questions, you can see that this is the logical fact which has been told in the passage, right? So that's a basic understanding of inference. What is an assumption, guys? What we assume. So assume is basically to presume or assume something. किसी चीज को presume करना, assume करना, या शायद ऐसा इससे ऐसा होगा. So what is the logical and something which can be understood from the passage. And conclusion is basically the final or the next step or the next let's say what we can say is the conclusion when we conclude everything. So this is the last part when we say, okay, this can be concluded. So rather than giving you information, I'll give you an example, guys. Hello, Juhi, welcome to the session. So, guys, okay, listen to this statement and let's see how can we differentiate inference from assumption and conclusion. So okay, let's start with this example. I'll give you a simple statement. Let's say the number of COVID cases have gone up from 1,000 to 15,000
per day. I think this is the current news that we can understand. So guys, आवाज कट रही है धीरू? Guys, am I not audible to everyone? Is there a problem with the audio? Please, if there is, do let me know, guys. So guys, okay. So this is the statement. The number of COVID cases have gone up from 1,000 to 15,000 per day, right? So guys, अब इसमें हम inference, assumption, conclusion, अब इनमें हम कैसे differentiate करेंगे? What can be understood from this statement? Now, inference can be that COVID cases are on the rise. Now, this is what we call an inference. So this is the logical fact that I can infer from this statement, that COVID cases are on the rise. That basically what I can understand, that every day the number of cases have jumped up from 1,000 to 15,000 per day in the recent past, right? So if I say COVID cases are on the rise, that is the inference. So this is what has been given in the statement. Now let's look at the assumption, right? So what can we assume from this statement? No, something like this. COVID 19 is a what can be assumed from this? COVID 19 is a let's say it's a pandemic, right? So COVID is a pandemic or endemic, let's say. Now, this is what I call an assumption. So what I assumed from this, that the number of cases of COVID-19 have gone up from 1,000 to 15,000. So that's a huge jump. So what assumption can we make from this? That COVID is a pandemic, that if it has risen up to 15,000 cases per day, right? So that means it is a pandemic, right? It is spreading everywhere. So this is called a assumption, right? That's what we assume from this statement. And what can be the conclusion? It can be conclusion after reading the statement. A conclusion can be put this way, that the government must look into this situation or this pandemic. So now let me differentiate between an inference, an assumption, and a conclusion for you, right? No, Ankit, that was nowhere given in the passage. That government did not hand it properly. So whatever is whatever is not related to the passage, do not, and that's what I told yesterday, Ankit, do not include any information that is not given in the passage, right? So how is government supposed to that's nowhere given in the passage. So you are using information from your day-to-day life. Don't do that. So inference, assumption, and conclusion is basically what, guys? Inference basically means this is the logical fact that has been given in the premises of the passage. So this is what we can infer, right? That's what Rafina, Siddiq, that's what we are, that's what we are learning now. So we are starting from the very scratch. So do watch all the sessions from the very beginning, and you will find it very easy to crack English in CSAT, right? So this is what we are going to learn in these sessions, and this is what we are going to help you with. So you've pointed out the question, and this is what we can understand, right? Government should not hand properly to the case or rising. No, that can be assumed. Okay, okay. But Ankit, we should not make assumptions which has no relation
to the given statement. If I say the number of COVID cases have gone up from 1,000 to 15,000 per day, now government may or may not have any role in this. But what can we infer, assume, and conclude from this? So inference is basically, guys, COVID cases are on the rise. This is a fact. This is a logical fact which we can infer by looking at the data given in the passage. Now, what can we assume? That if so many cases are coming every day, 15,000 cases are coming every day, then it is basically a pandemic, right? It has spread very quickly, and a lot many people are affected from COVID. So this can be assumed from the statement that COVID is a pandemic. And what can be concluded? That if 15,000 people are getting infected from COVID-19, that means what should be the conclusion? The government must look into this pandemic, or must look into this situation as soon as possible, right? Good afternoon, Ravi. Welcome to the session. So guys, so can you understand the difference between inference, assumption, and conclusion? So inference is basically some logical fact, data that is given in the passage. Assumption is whatever is given in the passage. Now you make an assumption based on that information, not around it, but based on that information, you can make that assumption that okay, if this has been given, so this means this. And conclusion is what is the next step. So that's what we call a conclusion. What can be concluded from this? So guys, this is the basic outlay, basic difference of inference, assumption, and conclusion. And let's understand it further with the help of some questions, so that you can get a better prospect, a better insight into this particular question. So guys, let's start with inference. So let's read the definition of an inference, guys. So what does inference actually means? A logical deduction made by using the facts given in the passage. So a logical deduction made by using the facts given in the passage. It's a notion formed by using evidence and reasoning. So this is very important, guys. So it is a notion formed by using evidence and reasoning that is given in the passage. The word infer means to carry forward, right? So what does it carry forward? An inference is an educated guess, the process of inferring things based on what is already known. So whatever is known from the passage, now you make an inference based on that logical fact or data. That is what we call inference. All right, guys. So basically, inference is something that we understand. Let's say, if I say, okay, what can you infer from this statement? I'm giving you a statement and you tell me what can be the inference. I'm saying every year 1 lakh student appear for UPSC exam, right? Or let's say 10 lakh student appear for UPSC exam every year, but only 1,000 of them are selected as UPSC officers or IAS officers or whatever you can say. So this is a statement. Now, what can you infer from this? Roughly around 10 lakh students appear for UPSC examination every year, but only 1,000 of them are selected or recruited as officers. So what can you infer from the statement, guys? Let's see how well you can you infer. Let's see your inference skills or deduction skills. What can you deduct from this statement, guys? Guys, let's make it an interactive session. कीर्तन में नहीं आए ना, हमने सिर्फ सुनना नहीं है, हमें पार्टिसिपेट भी करना है, राइट? तो उसको कीर्तन या जागरण नहीं बनाना. एवरीबडी मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस. सो यूपीएससी इज टफ. It's tough to crack. Ankit, you are very critical here. Exam is competitive. Yes, that's what I was waiting for in front. So out of 10 lakh students, only 1,000 are recruited as officers. So that does not mean that it's a tough exam, but it is competitive because so many students appear, but the number of posts are only 1,000, right?
Less number of students are selected in UPSC exam. Anshika, that's what you infer. It's a competitive exam. Very good, Sanya. Niranjan, so what can we infer from this statement? That every year 10 lakh, around 10 lakh students appear for UPSC exams, but only 1,000 of them are only 1,000 of them, 1,000 of them are recruited as officers. So there are a few inferences that I can infer from this. There are a few deductions that I can make from this statement. One is many students aspire to be UPSC officers. So that is first inference. Guys, you agree with me or not? The first logical inference that I can make from this is many students aspire to be UPSC officers. That's why 10 lakh students appear every year, despite knowing that only 1,000 of them will be selected. But still, there are 10 lakh students appearing every year. So, the first inference, the first logical deduction I can make is many students aspire to be UPSC officers. Agree or not? Agree or not, guys? What's becoming a rat race? Do work hard with smart study. So what can be inferred from this statement? Singham is back, Mithun. All right, I read your comment. Good to have you here, guys. So if you have not liked the session, please do like it, do share it. Nahi to maar padegi. We put so much efforts into it that I think it's fair to ask for just to click a like button and share it with your friends or known or near and dear ones. Right, guys? So you have to look at the logical deduction from the statement. So one deduction was many students aspire to be UPSC officers. Second deduction is if out of 10 lakh students, only thousand students are recruited, that means it's a competitive exam. Now, that's not an inference, that's an assumption, guys. That's what I was waiting for. I knew that you would be doing this, that it's a competitive exam, it's a tough exam. This was not given in the statement that it's a tough exam. So do not use any information from outside the words of the passage, guys. That's what I wanted to differentiate to you. Inference is that many students aspire to be UPSC aspirants, but it's a competitive exam. That's not given in the passage. That may not be true. It may be an easy exam, right? And the top 1,000 students may be selected. So it is not compulsory that it is always a tough exam. That's an assumption that you made. That was not an inference. Got it, guys? UPSC aspirants give exams, but few selected. That is literally given in the statement solar eclipse. So guys, understand the difference between an inference and an assumption. Do not assume anything that is not given in the statement. That's what I wanted to differentiate. So inference is a logical deduction, a logical fact that is given in the statement. Assumption is whatever you assume after it. Got it? So let's try to solve inference-based questions. Then we will solve assumption-based questions, and then we will solve conclusion-based questions. So guys, today we are only going to take inference-based questions. In the next session, we will take up assumption-based questions and then followed by conclusion-based questions. So today we are going to learn about inference, guys. So guys, don't answer ahead, please. Let's answer together, right? Okay, all teachers who are helping us Singhams. Okay, thank you so much for the kind words, Smithan. You have a kind heart here. So guys, let's read the questions and let's try to find out some inferences from these statements. So what I've done is I've given you a statement in red, and then there are three choices. Now there can be one or probably more than one inferences based on these statements. So let's try to solve them, guys. Question number one. Blood cholesterol used
to be thought of as a problem only for adults. So, blood cholesterol used to be thought of as a problem only for adults. इसका मतलब क्या हुआ कि कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को सिर्फ जो एडल्ट्स हैं उनमें ही एक प्रॉब्लम की वजह माना जाता था। इसका मतलब अब नहीं है। यूज्ड टू का मतलब क्या होता है? a discontinued action or a discontinued statement. So blood cholesterol used to be thought of as a problem only for adults. ऐसा सोचा जाता था कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एडल्ट्स में होती है। अब इस स्टेटमेंट से हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं? अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं गाइस। ब्लड कोलेस्ट्रॉल इज नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम फॉर एडल्ट्स, ओनली चिल्ड्रन हैव अ प्रॉब्लम विद ब्लड कोलेस्ट्रॉल, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल अफेक्ट्स बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। व्हाट डू यू से गाइस? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को सिर्फ एडल्ट्स में ही एक प्रॉब्लम की वजह माना जाता था, लेकिन अब क्या पता चल रहा है? व्हाट डू यू से गाइस? ए, बी और सी? वेरी गुड अंकित, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड साक्षी। नहीं सुमित, धीरू, ए नहीं है। ए में तो क्या लिखा है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल इज नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम फॉर एडल्ट्स। अब एडल्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कहां दिया हुआ है? थॉट का मतलब क्या होता है? सोचा जाता था। यूज्ड टू बी थॉट ऑफ का मतलब क्या होता है? ऐसा सोचा जाता था पहले कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिर्फ बड़ों में ही प्रॉब्लम होती है, छोटों में नहीं होती, लेकिन ऐसा सोचा जाता था। इसका मतलब क्या है कि अब क्या पता चला है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल बड़ों और छोटों दोनों में हो सकता है। गॉट इट गाइस? So the correct option, the correct inference here is option number C. Very well done, guys. So this will improve your deduction skills, and that's what we are going to use when we practice our CSAT passages in the upcoming sessions. Got it, guys? Ankit, I told you don't answer ahead यार, पहले एक बार मुझे पढ़ने दो, सभी साथ में आंसर करते हैं। Now let's come to the second question. सबको क्लियर हुआ guys? अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा यार, ठीक है? प्लीज फील फ्री टू आस्क एनीथिंग और एवरीथिंग as you may wish. Let's read question number 2. When apple growers मतलब जो सेब उगाते हैं, so when apple growers talk about new varieties of apple, जब वो नई एप्पल की वेराइटीज की बात करते हैं, they don't mean something developed last month, last year or even in the last decade. वो क्या कह रहा है कि सेब उगाने वाले जब एक एप्पल की नई वेराइटीज की बात करते हैं तो इनका मतलब ये नहीं होता कि एक नई वेराइटी जो पिछले महीने डेवलप हुई है या पिछले साल हुई है या पिछले डेकेड, पिछले 10 साल में हुई है। इसका मतलब क्या है? जो मैंने अब तक देखो स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है, बट मैं समझ सकता हूँ क्या कहना चाह रहा है कि एप्पल की नई वेराइटीज बनाने में बहुत लंबा वक्त लगता है, राइट? जो मैं इन्फर कर सकता हूँ स्टेटमेंट से। नाउ लेट्स रीड द statements, guys. Apple growers haven't developed any new varieties in recent decades. Some varieties of apples can be developed in a short time, but others take a long time. A third, new varieties of apples take many years to develop. Yes, guys. What do you say is the logical inference? बताया ना, अगर आप सही तरह से पढ़ते हो ना वर्ड्स को, उनका सही मतलब अगर आप क्लिक कर जाते हो, तो it's very easy to find a logical inference. Yes, guys. What do you say? Which is the logical? Thank you, Ankit. So what is the logical assumption that you can infer from this? What's a logical deduction that you can infer from this statement? A, B or C? And guys, everybody has to participate. गलत हो जाएगा कोई बात नहीं यार, हम कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे, करोड़ रुपए हार जाओगे, बट एटलीस्ट हमें पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं, गलत जा रहे हैं, ठीक है? वेरी गुड अंकित, वेरी गुड जूही, वेरी गुड मिथुन, हर्ष, धीरू। नहीं, बी क्यों होगा यार? ये कहाँ लिखा हुआ है कि कुछ वैरायटीज जल्दी हो जाती हैं? वो तो यही बोल रहा है कि यार ये वैरायटीज तो मतलब बरसों लगते हैं इसमें, इन वैरायटीज को डेवलप करने में। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड सौम्या, शाहिद, वेरी गुड। नहीं, सोलर, बी, सोनिया, सानिया, बी कैसे हुआ यार? ये कहाँ लिखा हुआ है कि कुछ वैरायटीज थोड़े टाइम में हो जाती हैं, बट कुछ वैरायटीज बहुत लंबा वक्त लेती हैं। जो मुझे लग रहा है the logical inference is new varieties of apples take many years to develop. वो क्या कह रहा है कि जब एप्पल ग्रोअर्स टॉक अबाउट न्यू वेराइटीज ऑफ एप्पल्स, जब वो नई वेराइटीज की बात करते हैं, उनका मतलब ये नहीं होता कि वो ऐसी वेराइटी की बात कर रहे हैं जो पिछले महीने, पिछले साल या इवन पिछले डेकेड में डेवलप हुई हो।
तो कहने का मतलब क्या है, नई वेराइटीज को डेवलप होने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। गॉट इट? सोलर इक्लिप्स, धीरू, सान्या, समझ आया? सही ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. In all cultures, gestures are used as a form of communication, but the same gestures may have very different meanings in different cultures. ये तो हमें पता ही है. ठीक है, हम जेस्चर्स क्या होते हैं गाइस? हैंड और सिग्नल्स जो हम हाथ से करते हैं, जैसे थम्स अप, मतलब बहुत अच्छा किया, या जैसे ये हम सिग्नल करते हैं, दिस इज अ जेस्चर, राइट? सो हर कल्चर में वो क्या कह रहा है कि सभी कल्चर्स में जेस्चर्स को कम्युनिकेशन की तरह से यूज किया जाता है। जैसे हम विंक करते हैं, वेव करते हैं, ठीक है, या हैंड जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट से हम कुछ करते हैं, तो ये होते हैं जेस्चर्स। तो वो क्या कह रहे हैं, सभी कल्चर्स में जेस्चर्स यूज होते हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि सेम जेस्चर हो सकता है कि उसी जेस्चर का एक कल्चर में कुछ और मतलब हो और दूसरे कल्चर में उसका कुछ और मतलब निकले। तो ये स्टेटमेंट थी इसकी। तो लेट्स रीड द ऑप्शंस गाइस. नो टू कल्चर्स यूज द सेम जेस्चर्स. One gesture will never have the same meaning in two cultures. Or a person from one culture may misunderstand the gestures used by a person from another culture. Hello Bigudas, welcome to the session. Guys, what do you say is the logical inference? वो क्या कह रहा है? No two cultures use the same gestures. Now, उसने may दिया है. It may have very different meanings. It may. That is, it is probable. There is a probability that the same gesture may have. हो सकता है कि उसी जेस्चर का दूसरे कल्चर में कुछ और मतलब निकलता हो। तो उसने स्टेटमेंट कह दिया, नो टू कल्चर्स यूज द सेम जेस्चर। ये तो यहीं से आउटराइट गलत हो गया। उसने पहले दिया है कि बहुत सारे कल्चर्स जेस्चर्स यूज करते हैं। वन जेस्चर विल नेवर हैव द सेम मीनिंग। गाइस, ये मैंने आपको कल समझाया था ना, एक्सट्रीम ऑप्शंस को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं। ओनली, नेवर, ऑलवेज। सो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ऑलवेज, नेवर, ओनली, ऑल, राइट, ये किसी ऑप्शन को एक्सट्रीम में ले जाते हैं। सो डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप एंड ट्राई टू बी एनालिटिकल अबाउट इट, राइट? सो सबसे पहले आंसर दिया हर्ष ने, वेरी वेल डन। तो क्वेश्चन पढ़ के कुछ सेकंड आप रुका करें, फिर आंसर देंगे। ओके धीरू जी, बिल्कुल 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 यार। अब देखो मैं रुका हुआ हूँ, अब आप आंसर दे दो धीरू जी इतने, धीरू सिंह, and then I will give you the answer. So Harsh says C, Ankit C, Mithun says C, धीरू, अरे धीरू ने तो आंसर दे दिया यार। निरंजन ए क्यों? ध्यान से पढ़ो उसको। Extreme, so that's what I said, Anshika, absolutely correct. Good job. So the correct inference here is option number C, guys. A person from one culture may misunderstand the gestures used by a person from another culture. That's what he wanted to convey, that all cultures use gesture. ठीक है, हैंड सिग्नल सारे कल्चर यूज करते हैं, लेकिन उन्हीं हैंड सिग्नल्स का एक कल्चर में अलग मतलब हो सकता है, दूसरे कल्चर में बिल्कुल अलग मतलब हो सकता है। तो क्या मतलब है कि अगर एक कल्चर का इंसान कोई हैंड जेस्चर यूज करता है और कोई दूसरे कल्चर का इंसान है, वो उसको गलत समझ सकता है। दैट्स अ लॉजिकल इन्फ्रेंस, राइट? गुड जॉब गाइस। ऑलराइट, लेट्स ट्राई अ फ्यू मोर। ठीक है, थोड़े से देखते हैं आप कैसे समझ आ रहा है, हमें नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है। So question number 4. Although sheep herding is an older and more beloved occupation, shepherds never caught the attention of American filmmakers the way cowboys did. तो वो क्या कह रहा है कि हालांकि शीप हर्डिंग क्या होता है? भेड़ चराना, ठीक है, या भेड़ों को पालना। तो भेड़ों को पालना एक्चुअली, यस, चराना नहीं, भेड़ों को पालना, सॉरी। तो कह रहा है हालांकि भेड़ों को पालना घुड़सवारी से या घोड़ों को पालने से पुराना भी और ज्यादा बिलवड ऑक्यूपेशन भी रहा है, लेकिन अमेरिकन फिल्म मेकर्स ने कभी भी, ठीक है, शेपर्ड्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया अपनी मूवीज में जितना उन्होंने काउबॉयज को दिया है। ये एक स्टेटमेंट है, राइट? सो अब लेट्स सी व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस। सबको समझ आ गया? मैं हिंदी में भी साथ साथ बता रहा हूँ, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड। हालांकि अमेरिकन फिल्म मेकर्स ने हालांकि भेड़ों को पालना ज्यादा पुराना और ज्यादा बिलवड ऑक्यूपेशन रहा है एज कंपेयर टू घोड़ों को पालना, लेकिन अमेरिकन फिल्म मेकर्स ने ज्यादा एम्फोसिस किस पे दिया है? काउबॉयज पे, मतलब घोड़े पालने वालों पे दिया है अपनी मूवीज में, शेपर्ड्स पे नहीं दिया है।
तो आप ऑप्शंस पढ़ते हैं गाइस. There have been more American films about cowboys than about shepherds. Okay, films about shepherds were popular before films about cowboys. Mhm. Cowboys are generally younger than shepherds. What do you say, guys? Is the logical inference? क्या कह रहे हैं? Shepherds never caught the attention of American filmmakers the way cowboys did. कि जितने attention काउबॉयज ने सीख किए हैं अमेरिकन फिल्म मेकर्स की, उतनी शेपर्ड्स ने कभी नहीं की. मतलब सिंपल से इन्फ्रेंस क्या है? अन अकेडमी प्लस आशु क्लास. अरे अब आपका नाम तो बताओ यार. नमस्ते यार. वेलकम एवरीवन. वंस अगेन थोड़ा लेट हो गए बट यू कैन वॉच द सेशन अगेन. आशुतोष चतुर्वेदी. अरे यस आई रिमेम्बर यू. कैसे आशुतोष? हाउ आर यू? धीरू सी कैसे? काउबॉयज आर जनरली यंगर देन शेपर्ड्स. कि वो उनसे छोटे होते हैं शेपर्ड से, ये कहाँ दिया हुआ है? बात तो यहाँ मूवीज की हो रही थी. हेलो मुनीर. So guys, the logical inference is there have been more American films about cowboys than about shepherds. बात यहाँ फिल्म मेकर्स की हो रही है कि वो क्या कह रहे हैं कि हालांकि भेड़ों को पालना ज्यादा पुराना और ज्यादा बिलवेड ऑक्यूपेशन रहा है एज कंपेयर टू घोड़ों को पालना, लेकिन अमेरिकन फिल्म मेकर्स ने शेपर्ड्स पे उतनी मूवी नहीं बनाई जितनी उन्होंने काउबॉयज पे बनाई है. तो देयर हैव बीन मोर अमेरिकन फिल्म्स अबाउट काउबॉयज देन अबाउट शेपर्ड्स. Thank you, Munir. Thank you for the trust that you have put in us. And I will try to live up to your expectations. So we are going to cover each and every passage that has been given in the previous year questions, guys, in these sessions. So these sessions are going to be very, very helpful. And I can promise you that this is going to be a game changer for at least paper 2, for CSAT paper, right? So let's see how we can, improve ourselves. So let's look at next question, guys. As an architect, Thomas Jefferson preferred the Roman style. As an architect, Thomas Jefferson preferred the Roman style as seen in the buildings of the University of Virginia, right? To the English style favored by Charles Bulfinch. वो क्या कह रहा है कि थॉमस जेफरसन जो आर्किटेक्ट, एज एन आर्किटेक्ट क्या प्रेफर करते थे? रोमन स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रेफर करते थे, जो कि जैसे कि एग्जांपल है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में. एज प्रेफर करना मतलब अहमियत ज्यादा देना किसको? अपने रोमन स्टाइल को. टू इंग्लिश स्टाइल फेवर्ड बाय चार्ल्स बल्फिंक. तो अब ये प्रेफरेंस की बात कर रहा है. अब इसमें हमें देखना है इन्फ्लुएंस क्या निकलता है. The architecture of University of Virginia was influenced by the Roman style. Okay. Bulfinch was an English architect. Okay. And Jefferson preferred to build in English style of architecture. Yes, guys. What do you say is the logical assumption here? Good job, Ashutosh. Thank you, Munir. Yes, guys. So what do you say is the logical inference here? धीरू ने, अब की बार धीरू ने बिल्कुल सही जवाब दिया. गुड जॉब धीरू. सो हर्ष वेरी गुड. जूही वेल डन. धीरू, अंकित, मिथुन, महिमा, साक्षी, सौम्या द्विवेदी, संजा, Nadia Nadeem, very good. Anshika, very well done, guys. See, we can eliminate option number C because this is contradictory. Jefferson preferred to build in English style, but he says Jefferson preferred Roman style. So we can eliminate C. Now, about A and B. Now, A is absolutely correct. The architecture of University of Virginia was influenced by the Roman style. So this is given in the passage. But Bulfinch was an English architect. Now, Bulfinch favored English style of architecture, but that does not mean that Charles Bulfinch was an English architect. So we cannot assume that. So that is not a logical inference. So the correct assumption is, correct inference is the architecture of the University of Virginia was influenced by the Roman style. Very well done, Chandan, Niranjan, Sheikh, Anas, Solar Eclipse, very well done. Good job. And let's try one more question today for inference. Even spiders that do not build webs from silk
use it for a variety of purposes such as constructing egg sacs and nursery tents. So even spiders, okay, वो spiders भी जो सिल्क यूज करके जाला नहीं बनाती, ध्यान से सुनना गाइस, वो क्या कह रहे हैं कि इवन वो स्पाइडर्स जो सिल्क को यूज ना करके जाला सिल्क को यूज करके जाला नहीं बनाती, लेकिन फिर भी वो सिल्क को और बहुत सारे कामों में यूज करती हैं, जैसे एग सैक बनाने के लिए, जैसे एग का जो लेयर होता है, कवर होता है, वो बनाने के लिए, और नर्सरी टेंट्स बनाने के लिए. सो अब इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं गाइस? ऑल स्पाइडर बिल्ड वेब्स, दैट इज फर्स्ट inference. Second is spiders that build webs do not build egg sacs or nursery tents. And third is silk is used by all spiders. What do you say, guys? Is the logical inference here in question number 6? ऑल स्पाइडर बिल्ड वेब्स. अरे ये कहां से आ गया जूही और सानिया? देखो, इवन स्पाइडर्स दैट डू नॉट बिल्ड वेब्स, ये तो पहले ही दिया हुआ उसने. तो ये कैसे कह रहे हो आपके ऑल स्पाइडर बिल्ड वेब्स कि सभी स्पाइडर जाला बनाती हैं? ये तो यही कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया यार स्टेटमेंट से. ये तो हो ही नहीं सकता. बी जो स्टेटमेंट है वो कहीं पे गिवन नहीं है पैसेज में. इवन स्पाइडर्स दैट डू नॉट बिल्ड वेब्स फ्रॉम सिल्क, ऑल स्पाइडर बिल्ड वेब्स, ये कहाँ गिवन है? आप ये अज्यूम कर रहे हो, अगर आप कर भी रहे हो तो उन्होंने ये लिखा है कि यार इवन वो स्पाइडर्स जो सिल्क यूज नहीं करती वेब बनाने के लिए. तो आप सोच रहे हो कि शायद कोई और मटेरियल यूज करती हो, लेकिन गाइस यू कैन नॉट अज्यूम एनीथिंग दैट इज नॉट गिवन इन द पैसेज फॉर इन्फ्रेंस. द लॉजिकल इन्फ्रेंस इज सिल्क इज यूज्ड बाय ऑल स्पाइडर्स. वो क्या कह रही है कि इवन वो स्पाइडर्स जो सिल्क यूज नहीं करती जाला बनाने के लिए, वो सिल्क को यूज करती हैं दूसरे पर्पसेस के लिए, जैसे constructing egg sacs and building nursery tents. Got it? The correct inference here was option number C. So guys, I hope you have understood what inference actually means. अब सबको समझ आ गया इन्फ्रेंस और assumption में क्या डिफरेंस होता है? अज्यूम होता है कोई चीज को, इमेजिन करना, अज्यूम करना कि यार अच्छा ऐसा लिखा है तो शायद ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, ये अजम्पशन होती है. लेकिन जो गिवन है उसी बेसिस पे अपना एक इन्फ्रेंस लेना, एक लॉजिकल फैक्ट, एक डिडक्शन लेना, उसे इन्फ्रेंस कहा जाता है. सो गाइस, नाउ यू कैन टेल मी योर स्कोर आउट ऑफ 6. कितने ठीक हुए और कितने गलत हुए आपके? नाउ टेल मी योर स्कोर एंड बी ऑनेस्ट यार, मैं कोई प्राइज नहीं देने वाला, ठीक है? So I just want to see if I'm getting to you or if you are able to comprehend. So guys, be honest and tell me your score out of these 6 questions. Very well done, Sakshi. 6 out of 6. Kudos to you. Harsh, good job. Yeah. So proud of you guys. Sania, 4. Well done. Not bad. Chandan, 5 out of 6. Not bad. Soumya, 6. Very well done. Very good. Mithun, all 6. Correct. Good job. Now you are the single. Right. Anshika, 5. Not bad, Anshika. Ankit, 6. Good job. सोलर के लिए तालियां बजाओ एक बार यार. सोलर ने 3 में से 6 मार्क्स लिए यार. 6 में से 3 नहीं, 3 में से 6. अरे मजाक कर रहा है. नहीं, 3 out of 6. Okay, we still need to work hard. Same Dhiru, we still need to work a bit more. तो सारे सेशंस एक बार शुरू से देख लो, so you'll get a better prospect. Juhi, not bad, 5 out of 6. Nida, 4 out of 6. All right, not bad. Good job, guys. So this session was about what inferences are. So guys, in the next session we are going to discuss assumption, exactly like what we did inference today. In the next session we are going to discuss assumption based questions, and then further we are going to discuss conclusion based questions. So guys, today this session was about inferences, right? So we will take up assumption in the next session, and we will take up conclusion based questions in the further session. गुरु देवो भवा. अरे नहीं यार, ये अभी पुरानी हो चुके हैं सेइंग्स ये. वो विद्यार्थी के 5 लक्षण हमें बताए जाते थे बचपन में, याद है किसी को?
एक अच्छे स्टूडेंट के 5 लक्षण होते थे जो हमें बचपन में संस्कृत में पढ़ाए जाते थे। कैन एनीबॉडी टेल मी वो कौन से लक्षण थे? बात जैसी नजर, ऐसे कुछ होता था, राइट? So guys, that's it for this session. All right, that's it for this session, and we are going to learn a lot more in these sessions about CSAT English preparation. So guys, if you have any doubts or if you have any queries, you can drop us an email at hello@civilstaff.com, or you can also, you can also call us at this number 8146207241. And guys, we also have a dedicated course for the preparation of prelims as well as mains, and you can check it out. It's really impressive, guys. Honestly telling you, I myself was very amazed after looking at the collective effort of the whole team put into preparation of that course. It's a really beneficial, it's a very helpful course, and I think you should try it out if you are actually preparing for this. Guys, how was the session? अरे ये तो बताते जाओ, भागो मत यार, अभी सेशन छोड़ के मत जाना। प्लीज बताते तो जाओ कैसा लगा सेशन। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर दो यार, कोई इशू नहीं है, ठीक है? लेकिन जस्ट डू शेयर योर फीडबैक विद मी इफ यू नीड एनी इम्प्रूवमेंट, एनी चेंजेस, anything, anything else. If you want to put it, if you want us to include in these sessions, we'll be more than happy to look at it or look into it. Yes guys, so how was the session, and were you able to comprehend each and everything that we discussed today or not? Kak chishta bako dhyanam. Yes Ankit, very good. Kak cheshta bako dhyanam, swan nindra, तथा च अल्पाहारी, गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। सौम्य, अब मैं जो अब नया वाला जो मैंने किसी एक स्टूडेंट ने बताया था मुझे, अब मैं आपको नए वाले 5 लक्षण सुनाता हूँ जो एक स्टूडेंट के होते हैं। एंड दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर स्टूडेंट्स दीज डेज जो घर ही पढ़ते हैं। तो 5 लक्षण ऐसे कुछ बताए थे। गाढ़ निंद्रा, सूढ़ भोजनम, ऐसे कुछ था। गाढ़ निंद्रा सूढ़ भोजनम, जांग थुल, हाथ थुल जांग थुल, गाढ़ निंद्रा सूढ़ भोजनम, ऐसे कुछ था। विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये हाथ भी मोटे पैर भी मोटे, गाढ़ निंद्रा मतलब खूब सोना, सूढ़ भोजनम मतलब खूब सारा खाना खाना, ऐसे कुछ था। तो आजकल कुछ फनी बहुत बना देते हैं बच्चे। सो राइट गाइस, सो यू शुड फॉलो दीज 5 ट्रेट्स ऑफ अ गुड स्टूडेंट। लास्ट नहीं याद आ रहा कि, कोई बात नहीं, सौम्या ने लिख दिया। सौम्या, वेरी वेल डन, थैंक यू गाइस। तीन, कोई बात नहीं धीरू, 3 टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं लेने का बाबू, डोंट वरी, ठीक है? जादू की झप्पी लो किसी से या दो किसी को, एंड जस्ट गेट इनटू इट। वी कैन ओनली लर्न टू मूव फॉरवर्ड, we cannot stay stuck anywhere in our life, and that's why we call ourselves human beings, the smartest species living on the planet, right? तो बुद्धिजीवी होने का पर्पस है कुछ, और उसका हक अदा भी करना है हमें, ठीक है? सो थिंकिंग अबाउट दिस, गो फॉर इट गाइस। मोर सीजन्स आते रहेंगे। मिथुन, कौन सा सीजन चाहिए? समर चाहिए, विंटर चाहिए, सीजन 1, सीजन 2, कौन सा सीजन मांग रहे? सेशन बोला, सीजन बोल रहे हो, या ऑटो करेक्ट से हो गए? थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू हर्ष, वेरी गुड, थैंक यू अंशिका, थैंक यू अंकित। महाभारत अल्पहारी, यस, कलयुग है सर, थैंक यू, कलयुग चरम पर है। So all right guys, don't worry, time तो ऐसे चलता रहता है, but what you can do is understand yourself, introspect, and give it your best shot. And this is a fact that around 10 lakh students appear for UPSC every year, and 1,000 odd are selected. So you need to target that, not 1,000, you need to target the top 100 and work towards that, right? So thank you everyone for joining in the session, guys, and that's it for today. I'll take your leave, let's call it a day, and I'll see you next week with next session with more questions and more sessions on UPSC CSAT English, and we will strive to be excellent at our attempts, right guys? Thank you so much guys, and all the very best. Take care, bye bye, and happy learning to all of you.